औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ मेरा तीसरा सेशन है और टुडे वी विल डिस्कस द केमिस्ट्री पार्ट ऑफ दिस टेस्ट। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल and I am professor of chemistry teaching since 1993। जो पेपर में क्वेश्चन हैं तो वो बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप तवज्जो से अगर सुनेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखें और समझने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है केमिस्ट्री का। टेट्रामीथाइल साइलेन, this is a compound tetramethyl silane which is used as a solvent in the NMR machine। जब आप किसी कंपाउंड का NMR स्पेक्ट्रम हासिल करना चाहते हैं तो उसको हम टेट्रामीथाइल साइलेन में डिज़ोल्व करते हैं। इसकी खूबी ये है कि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और आसानी से ऑर्गेनिक कंपाउंड से इसको हम जुदा कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये इनर्ट है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है और नॉन इन्फ्लेमेबल है, इसको आग नहीं लगती। टेट्रामीथाइल साइलेन में अगर आप देखें तो सिलिकॉन के साथ 4 मीथाइल ग्रुप अटैच होते हैं और इट हैज़ अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये सारे हाइड्रोजन जो हैं ये 12 हाइड्रोजन बनते हैं, बट ऑल ऑफ दीज हाइड्रोजन, ऑल हाइड्रोजन एटम्स दे आर आइडेंटिकल। इनमें कोई फ़र्क नहीं है एनवायरनमेंट के लिहाज से, तो इस वजह से ये सारे हाइड्रोजन आइडेंटिकल हैं। तो बज़ाहिर इसमें 12 हाइड्रोजन हैं, लेकिन NMR मशीन में ये पीक देंगे और दे विल गिव ओनली अ सिंगल पीक। इसका जो डेल्टा होता है वो ज़ीरो होता है, इसको केमिकल शिफ्ट कहते हैं। अगर आप किसी NMR स्पेक्ट्रम को देखें तो यहाँ पर ज़ीरो पर जो पीक होता है, दिस पीक इज़ ड्यू टू TMS इसको कहते हैं, टेट्रामीथाइल साइलेन। और जूँ हम इस तरफ आते हैं तो इसका जो केमिकल शिफ्ट है वो ज़्यादा होता है। इसका यूनिट होता है ppm। तो केमिकल शिफ्ट जब ज़्यादा होता है इसको डाउन फील्ड कहते हैं, डाउन फील्ड सिग्नल। और इस तरफ जब हम जाते हैं तो इसको अप फील्ड सिग्नल कहा जाता है। ये स्केल तकरीबन 12 तक जाता है, 0 से लेकर 12 तक। तो NMR मशीन में टेट्रामीथाइल साइलेन 0 पर पीक देता है और ये पीक जो है ये सिंगलेट की शक्ल में होता है, इट इज़ अ सिंगल पीक। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अल्डिहाइड्स ऑन रिएक्शन विद 1 मोल ऑफ अल्कोहल। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6। आप अगर अल्डिहाइड को देखें, दिस इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं RCH और यहाँ पर मैं इस तरह लिखूं, एक बॉन्ड में तोड़ देता हूँ और फिर इसके साथ मैं अल्कोहल मिलाता हूँ। सो दिस इज़ ए मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। ये H इधर अटैच हो जाता है और OR जो है ये इधर अटैच होगा, एंड यू सी दैट यू विल गेट RCOH एंड OR। अब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच हो और इधर OR ग्रुप अटैच हो, इसको हेमी एसीटाल कहा जाता है। When 1 मोल ऑफ अल्कोहल, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 मोल अल्कोहल अल्डिहाइड के साथ मिलता है, तो इधर H अटैच होगा और इधर अल्कोक्सी ग्रुप अटैच हो जाता है, OR ग्रुप। अगर ये कीटोन और अल्डिहाइड दोनों हेमी एसीटाल और हेमी कीटाल बनाते हैं।
अगर आप दो फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ कीटोन, इसके साथ में अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल मिलाना चाहता हूँ. दिस इज़ वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, दिस इज़ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल. तो यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन होगा और इससे एक वाटर रिमूव होगा एंड वी विल गेट RCCH3OR and OR. So this compound is then called acetal, or in case of ketone it is called ketal. Acetal or ketals. So when 1 mole of alcohol combined with an aldehyde or ketone, so we get hemi-acetal. Hemi का मतलब होता है आधा acetal. और जब दो मॉलिक्यूल हम इसके साथ मिलाते हैं तो फिर दो अल्काक्सी ग्रुप इसके साथ मिल जाते हैं. ये अगर आप ग्रुप देखें COR ग्रुप, दिस इज द ईथर लिंकेज, दिस इज अनदर ईथर लिंकेज. सो देयर आर टू ईथर लिंकेजेस ऑन द सेम कार्बन. इस वजह से इसको हम जेम डाई ईथर भी कहते हैं, यानी जेमिनल डाई ईथर. Acetal or ketals are geminal diethers because on the same carbon we have two ether groups. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसीटाल और कीटाल बनाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है. ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप के लिए हम ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्डिहाइड और कीटान ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अल्डिहाइड ग्रुप को कीटाल या एसीटाल में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो बाकी जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम रिएक्ट करते हैं और ये हिस्सा उसका रिएक्शन से प्रोटेक्ट हो जाता है. तो इसको प्रोटेक्टिंग एजेंट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द शेप ऑफ हाइड्रोनियम आयन. तो आप अगर हाइड्रोनियम आयन का शेप देखें, इट इज़ लाइक दिस and electron pair is present on oxygen and it has a positive charge. तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये दूसरा लोन पेयर जो है ऑक्सीजन पर शेयर नहीं कर सकता. ऑक्सीजन के साथ दो लोन पेयर होते हैं, ये एक लोन पेयर बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकता है, दूसरा लोन पेयर बॉन्डिंग में हिस्सा इस वजह से नहीं लेगा बिकॉज देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन. सो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर गेट्स टाइटली बाउंड टू दिस पॉजिटिव चार्ज, due to which it becomes inert. So the second electron pair which is present on oxygen, it is inert. And the shape of hydronium ion resembles the shape of ammonia. So both of these species, they are trigonal and pyramidal. The bond angle in ammonia is 107. But in this case, due to higher electronegativity of oxygen and due to positive charge on oxygen, the electron pair is larger over here. It is 113.5 degree. A compound C4H10 and O yields a compound C4H28 on oxidation. The compound is called C4H10O. The compound C4H10O is called, तो आप देखें ये जो है आपको पता है कि अल्कोहल जो होते हैं ना वो ऑक्सीडेशन पर दे प्रोड्यूस एल्डिहाइड. सो द गिवन कंपाउंड इज एक्चुअली एन अल्कोहल. आप देखें ये compound, it has 4 carbon atom and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and this is 10. So H10 and O. This is actually butanol. तो जब इसकी हम डिहाइड्रोजनेशन करते हैं, -H2 करते हैं, तो -H2 जो है हाइड्रोजन का रिमूवल, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. सो यू विल गेट दिस H and this H, they are lost. So you are left with CH3,
CH2 and here an aldehydic functional group is produced. So you get butanol and it has 4 carbon atoms and 8 hydrogen, C4, H8 and O. So there are 2 hydrogen less in aldehyde as compared to the alcohol. The process is called dehydrogenation. In other words, it is called oxidation reaction. और आपको मैंने पहले भी बताया था कि अल्डिहाइड को अल्डिहाइड इस वजह से कहते हैं कि दे आर obtained from alcohols. So this al stands for alcohol and dehyde stands for dehydrogenation. So dehydrogenation of alcohol produces an aldehyde. हाँ, अगर आपके पास secondary alcohol हो, for example, this is a secondary alcohol. तो इसकी अगर आप dehydrogenation करते हैं तो आपको कीटोन मिलेगा. You will get a ketone. This is a primary alcohol. This is a secondary alcohol. तो primary alcohol जो है, primary alcohol ये ऑक्सीडेशन पर या dehydrogenation पर they produce aldehydes और secondary alcohol they produce ketones. On the other hand, अगर आप tertiary alcohol देखें, this is a tertiary alcohol. This is tertiary carbon to which 3 other carbon are attached. चूंकि यहाँ पर tertiary carbon के साथ हाइड्रोजन नहीं है, so that's why it cannot be easily oxidized. ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा. हम कहते हैं कि tertiary alcohol resist oxidation. और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को पहचानने के लिए हम इस तरह करते हैं कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल के साथ पोटाशियम डाइक्रोमेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन में लाएं तो ये जो पोटाशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर है ये डिकलराइज हो जाता है. इसका मतलब ये है कि प्राइमरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड एंड इन टर्न पोटाशियम डाइक्रोमेट विल रिड्यूस्ड. इस प्रोसेस में ऑरेंज कलर इट विल नॉट डिकलराइज, सॉरी, it will convert into green because chromium goes from +6 to +3 state. In +6 state chromium is orange or yellow, but chromium +3 is green. So potassium dichromate turns green when it reacts with a reactive alcohol, with oxidizable alcohol. और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ अगर हम एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट मिलाएं तो अगेन द पोटाशियम डाइक्रोमेट विल चेंज कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन. लेकिन दोनों में फ़र्क हम प्रोडक्ट से करेंगे. यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज़ एन अल्डिहाइड. यहाँ पर प्रोडक्ट को हम जब एनालाइज करते हैं इट मेक्स अ कीटोन. टर्शरी अल्कोहल जो है उसके साथ अगर आप पोटाशियम डाइक्रोमेट मिलाते हैं सो इट्स कलर विल नॉट चेंज बिकॉज इट इज स्टेबल टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन. टर्शरी अल्कोहल जो है उसको हम अंडर वेरी हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से हम उनको कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, बट नॉट विद पोटाशियम डाइक्रोमेट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. और आपको पता है कि अगर पोटाशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन आप लें, एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट, और अगर आपको शक हो कि किसी ने अल्कोहल पिया है तो आप एक ट्यूब उसको दें और उसे कहें कि आप इस सॉल्यूशन के अंदर फूंक मारें. तो जब वो उसमें फूंक मारता है तो अल्कोहल यहाँ पर उसके मुंह से अल्कोहल के वेपर्स निकलते हैं. ये अल्कोहल के वेपर्स आकर इसके साथ रिएक्ट करते हैं.
अब अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज से ग्रीन हो जाए तो इसका मतलब ये है कि जो आदमी है, जो सस्पेक्ट है, तो वो ड्रंक है और उसने अल्कोहल पिया है। लेकिन अगर वो इस सोल्यूशन में फूंक मारे और पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर चेंज ना हो तो इससे पता चलता है कि द पर्सन इज़ नॉट ड्रंक। ये बाहर के मुल्कों में ब्रीथ एनालाइज़र होता है, एक आला होता है जिसके ज़रिए से ये हम मालूम करते हैं कि आया ये पर्सन जो है ड्रंक है या नहीं, क्योंकि ड्राइविंग के दौरान अल्कोहल पीने पर पाबंदी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रिसिपिटेट कॉपर ऑक्साइड फ्रॉम फिलिंग सोल्यूशन बट डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम मेटल। तो आप देखें कि अल्डिहाइड जो होते हैं दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर आप फिलिंग सोल्यूशन ले लें, फिलिंग सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों रिएक्ट करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है इट कन्वर्ट्स इनटू Cu2O प्लस H2O प्लस O। अगर आप इसके 2 मोल्स ले लें, इफ़ यू टेक 2 मोल्स ऑफ इट, then you get 2 moles of water, 1 mole of cuprous oxide and 1 oxygen. So this oxygen is then responsible for the oxidation of aldehyde into carboxylic acid. तो नेट रिएक्शन ये होगा कि कॉपर जो है ये +2 स्टेट से +1 स्टेट में चला जाता है, और +2 स्टेट में इसका कलर जो है इट इज़ ब्लू, +1 स्टेट में इसका रेड कलर है। तो क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रिसिपिटेट बन जाता है। अल्डिहाइड देमसेल्फ दे आर ऑक्सीडाइज्ड बट कॉपर इज रिड्यूस्ड। तो जितने भी अल्डिहाइड हैं मां सिवाय एरोमेटिक अल्डिहाइड के, बेंजल्डिहाइड जो है वो फिलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन स्ट्रेट चेन वाले जो अल्डिहाइड होते हैं सो दे विल रिड्यूस द फिलिंग सोल्यूशन। और सोडियम के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। सोडियम के साथ वो कंपाउंड रिएक्ट करता है जिसके साथ OH ग्रुप हो, इट विल रिएक्ट विद सोडियम। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर देखें तो इसमें आप देखें OH ग्रुप है, आप इसके साथ सोडियम मिलाते हैं यू विल गेट हाइड्रोजन गैस। आप अल्कोहल देखें, अल्कोहल में OH ग्रुप है, इट विल रिएक्ट विद सोडियम, will produce hydrogen gas। आप फिनोल देखें, ये सोडियम के साथ मिलके हाइड्रोजन गैस देगा, क्योंकि हाइड्रोजन इज अटैच टू ऑक्सीजन। आप अगर अल्डिहाइड देखें, अल्डिहाइड में हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच होता है, तो दिस हाइड्रोजन हैज लेस पॉजिटिव चार्ज, द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज लेस पोलर and that's why it does not react with the sodium metal. Question number 47, which of the following is not a secondary pollutant? पोल्यूटेंट के 2 अकसाम हैं, एक को प्राइमरी पोल्यूटेंट और दूसरे को सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो होता है कि जब हम किसी पेट्रोल या कोल या किसी ऐसे चीज़ को जो कंबस्टेबल मटेरियल हो उसको जब हम जलाते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट डायरेक्टली उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं दे आर कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। आगे जाकर वो एटमॉस्फेयर में मज़ीद रिएक्शन करके दूसरे पोल्यूटेंट बनाते हैं, तो जो दूसरे पोल्यूटेंट इससे बनते हैं दे आर कॉल्ड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो ये जो नाइट्रिक एसिड है दिस इज़ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इसकी वजह यह है कि जब आप हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो हाइड्रोकार्बन में यानी पेट्रोल और कोल के अंदर नाइट्रोजन होता है। दिस नाइट्रोजन कन्वर्ट्स इनटू NO2. Now NO2 is the primary pollutant. This is the primary pollutant.
आप अगर इसके साथ फिर हवा में जाकर ये वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनाता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन, सो इट इज़ अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट. पान या पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, this is also a secondary pollutant. Benzyl formaldehyde CH2O, and option number C, this may be written as CHO or C double bond OH. So this is aldehyde, this is also a secondary pollutant. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमें मिलता है फ्रॉम द कंबशन ऑफ फ्यूल. Question number 48. Question number 48. The correct order of acidity among the following. तो ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं they are a stronger acid among the organic compound, not among the inorganic compound. Carboxylic acid are stronger than phenol. Phenol is stronger than water. Water is stronger acid than alcohol. Alcohol is stronger acid than acetylene. Acetylene is stronger than alkyne is stronger than alkene, and alkene is stronger than alkane. So memorize this sequence, and it is very important. In some books they have written that water has higher acidity than phenol, but it is not correct. Phenol has higher ionization constant value. Its Ka value is higher than water. So phenol is more acidic as compared to water. That's why phenol reacts with bases and it produces salts, but water does not react with bases. So the correct choice is C. Correct choice in question number 48 is C. Hot adhesives, या इसको हम कहते हैं hot melt adhesives. Hot melt adhesives इसको कहते हैं. So they were discovered by Procter and Gamble. This is a chemical producing company in America. और ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये कंपनी जो है ये बनाई थी. इसको इस वजह से प्रॉक्टर एंड गैम्बल एसोसिएट कहते हैं, या प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी इसको कहते हैं. ये साइंटिस्टों के नाम हैं जिन्होंने ये कंपनी बनाई थी. लेकिन ये जो हार्ट मेल्ट एडहेसिव्स हैं ये थर्मोप्लास्टिक हैं, तो ये इन दो साइंटिस्टों ने नहीं बनाए थे, लेकिन इनके कंपनी में ये तैयार हुए थे. जिस साइंटिस्ट ने ये हार्ट मेल्ट एडहेसिव्स बनाए थे उसका नाम है कोप, COPE. तो ये जो हार्ट मेल्ट एडहेसिव हैं ये सॉलिड रॉड की शक्ल में होते हैं, और इसके लिए एक गन इस्तेमाल होता है. गन में इसको रखा जाता है, उसमें हीटिंग कॉइल होता है, तो ये मेल्ट हो जाते हैं और फिर इसका स्प्रे करते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर. ये हार्ट मेल्ट एडहेसिव की ज़रूरत उस वक़्त पड़ी कि आम जो एडहेसिव्स हैं, जो सॉल्वेंट बेस्ड एडहेसिव्स हैं, तो वो जब हवा के अंदर मॉइस्चर बहुत हो, ह्यूमिडिटी बहुत हो, तो वो सही काम नहीं करते हैं. इस वजह से उनके सब्स्टिट्यूट के तौर पर दीज हार्ट मेल्ट एडहेसिव्स वर डिस्कवर्ड. अगरचे इन एडहेसिव्स के नकाइस ये हैं कि ये हाई टेम्परेचर पर काम नहीं करते हैं. नेक्स्ट, so these were actually hot melt glues they were discovered in 1940 by Procter and Gamble Associates. Question number 54. Superoxide of potassium superoxide का फार्मूला जो है वो क्या है? तो देखें, the formula of superoxide is
KO2 और इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये -1 होता है, -1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो यू गेट -1, पोटाशियम का +1 है। और अगर आप देखें तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान देयर इज़ 1.5 बॉन्ड, दिस इज़ 1.5 बॉन्ड, दिस इज़ 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हम इसको कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन इसने असल में पोटाशियम से लिया है, तो पोटाशियम पर +4 होगा। दिस इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू पोटाशियम एंड एज ए होल this OO has -1 charge, but if you find the contribution of one oxygen, so it comes out to be -1/2. So -1/2 charge is devoted to one oxygen and the other half to other oxygen. Superoxides और superoxide जो है ये they are paramagnetic due to unpaired electrons. तो सुपर ऑक्साइड के दरमियान यानी दो ऑक्सीजन के दरमियान सुपर ऑक्साइड में देयर इज 1.5 बॉन्ड विच इज आल्सो कॉल्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द इक्वेशन A is equal to epsilon C(n)(2)L. C is the concentration of solution. L जो है A is equal to epsilon multiplied by C multiplied by length. A show absorbance. देखिए आपके साथ अगर सॉल्यूशन हो और इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है और यू हैव अ सॉल्यूट, जब आप इससे लाइट पास करते हैं तो हाउ मच लाइट इज एब्जॉर्ब हेयर, द एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूट की मिकदार जितनी ज़्यादा होगी सो मोर एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस, द मॉलिक्यूल विल एब्जॉर्ब ग्रेटर अमाउंट ऑफ लाइट। सिमिलरली ये जो आपने कंटेनर रखा है जिसको हम कविट कहते हैं, तो इसका जो पाथ लेंथ है इसको हम L कहते हैं। ये इधर से इधर तक जाता है, ये लाइट ट्रेवल करता है, तो जितना ये पाथ लेंथ ज़्यादा होगा उतना एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके साथ एक सॉल्यूशन है बड़े कंटेनर में, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पाथ लेंथ अब ज़्यादा हो गया है, तो मोर लाइट विल बी एब्जॉर्ब हेयर। और E जो है इसको मोलर एब्जॉर्बिविटी कहते हैं, तो ये डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, जो आपने सॉल्यूट डाला है और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो ये उस पर डिपेंड करता है। इसको मोलर एब्जॉर्बिविटी कहते हैं। तो दिस लॉ इज कॉल्ड Beer-Lambert law. This is the equation of the Beer-Lambert law. The law was proposed by two scientists. One is named as Beer and the other one is called Lambert. Question number 56. Which one of the following compound does not exist in solid state? आपको पता होगा कि वाटर जो है उसके अंदर कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट मौजूद होते हैं। एंड दीज बाइकार्बोनेट, द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट मेक वाटर टेम्पररी हार्ड। इसको टेम्पररी हार्डनेस कहते हैं। अगर आप इसको हीट करते हैं सो कैल्शियम कार्बोनेट plus water plus carbon dioxide is formed. Magnesium bicarbonate changes to magnesium carbonate, water and carbon dioxide. ये जो हैं दोनों कंपाउंड ये पानी में insoluble हैं, so they will precipitate, they settle at the bottom of the container and the water becomes soft. Now it is soft water. When they are in dissolved form, calcium ions and magnesium are in dissolved form in water. So water is called hard water. So bicarbonate of calcium and magnesium make water hard, but this hardness is called temporary hardness because on heating you can remove this hardness. आपने देखा होगा कि जब आप पानी को बहुत
गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, तो बॉटम के ऊपर कुछ सफ़ेद किस्म के चिल्के से बन जाते हैं. सो दे आर एक्चुअली दी कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड दे सेपरेट फ्रॉम वाटर. अब ये जो बाइकार्बोनेट हैं, तो ये अगर आप इन बाइकार्बोनेट को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हीट करते हैं, ये जब पानी के अंदर सोल्यूशन फॉर्म में मौजूद होते हैं, जब आप इसको हीट करते हैं, सो दे विल अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू कार्बोनेट. दे आर लेस स्टेबल टुवर्ड्स हीट, दे हैव लोअर थर्मल स्टेबिलिटी. सेकंड ग्रुप के जो बाइकार्बोनेट हैं, पीरियाडिक टेबल में सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, उनके बाइकार्बोनेट दे आर लेस स्टेबल टुवर्ड्स हीट. इनकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है. इसकी वजह यह है कि सेकंड ग्रुप के एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है. दे हैव हायर चार्ज डेंसिटी, दे हैव स्मॉलर साइज एंड दे हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर. तो इस कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से सेकंड ग्रुप के बाइकार्बोनेट जो हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. दे आर ओनली स्टेबल इन सोल्यूशन फॉर्म. ऑन द अदर हैंड, अगर आप फर्स्ट ग्रुप के बाइकार्बोनेट ले लें, तो दे आर स्टेबल और ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. सो द टेक्निकल पॉइंट इज दैट द बाइकार्बोनेट ऑफ द सेकंड ग्रुप, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर. दे आर नॉट स्टेबल in solid state, in pure solid state. Rather, on heating they undergo decomposition. What is the chemical formula? This is a bit simple question, but it is usually asked in papers. Formula of washing soda. तो ये जो कंपाउंड के फार्मूले हैं, आम फार्मूले, इनको आप ज़रूर याद रखें और इनके कॉमन नेम भी आपको आने चाहिए. अब मिसाल के तौर पर कास्टिक सोडा जो है उसका फार्मूला है NaOH, और कास्टिक पोटाश जो है ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं. ब्लू विट्रियोल इज़ द नेम ऑफ कॉपर सल्फेट. ग्रीन विट्रियोल इज़ द नेम ऑफ ferrous sulfate. White vitriol is the name given to zinc sulfate. So these common names, they must be memorized. You should know these things. These are the common names of some compounds. So the formula of washing soda is Na2CO3 and decahydrate. So in question number 61, option number D is correct. This is Na2CO3 decahydrate is the formula of washing soda. अगर आप इससे पानी हटाएं, if there is no water, then it is called soda ash, and NaHCO3 is called बेकिंग सोडा. इसको बेकिंग सोडा कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 62, solubility of magnesium hydroxide can be increased. How you can increase the solubility of magnesium hydroxide? आप देखें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, it ionizes into magnesium ion, and this is a reversible process. Magnesium hydroxide ionizes into magnesium and hydroxide ion. These two ions recombine and they make magnesium hydroxide. So that's why the solubility of magnesium hydroxide is less. आप अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं तो what we do, हम इस solution में अमोनियम क्लोराइड डालते हैं. It is comparatively more soluble. So it produces ammonium ion and chloride ion. फिर ये अमोनियम आयन जो हैं ये हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कंबाइन होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. इसका नतीजा ये होगा कि हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन होती है दैट डिक्रीजेस. जब इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी,
So according to the Scheidler principle, when you decrease the amount of the product, so forward reaction will occur. जितना forward reaction होगा तो ये ज़्यादा solubilize होगा. So you can enhance the solubility of magnesium hydroxide by adding ammonium chloride. Why? Because ammonium ion which are produced, they combine with the hydroxide ion. As a result, there is decrease in the concentration of the product, and the system shift towards the right in the forward direction. So movement of this reaction in the forward direction is responsible for the dissolution of magnesium hydroxide in water. So solubility is enhanced. So in question number 62, option B is correct. Ethylene oxide, question number 63 है. Ethylene oxide, ये इसका फार्मूला है. ये जो इथाइलिन ऑक्साइड है ये हम बतौर फ्यूमिगेंट इस्तेमाल कर सकते हैं. ये मच्छरों और मक्खियों को मारता है और इसको भगाता है. इसको फ्यूमिगेंट कहा जाता है और इस प्रोसेस को फ्यूमिगेशन कहते हैं. मुंगवाई खाना चिम्माश होता है धुमा ओके ची ओ तख्ती की लुगे वर्ता ओके दागा लुगे वर्ता मुंगा को इथाइलिन ऑक्साइड तो वो से मर जाते हैं. लेकिन अगर इस कंपाउंड के साथ आप वाटर मिलाएं तो ये बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होते हैं और ये बॉन्ड टूट जाता है तो OH इधर अटैच होगा. CH2OH, CH2OH. Actually glycol is formed. It is a dihydric alcohol. इसमें दो OH हैं. So it is an example of dihydric alcohol. और ये सारा प्रोसेस जो है ये एसिड कैटालाइज्ड होता है. एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है. So ethylene oxide on reaction with water produces an alcohol. So this is a good method for the preparation of alcohol. हम क्या करते हैं? We will take ethylene, इसके साथ हम ऑक्सीजन मिलाते हैं. In the presence of silver at high temperature, we get ethylene oxide. और एसिड की मौजूदगी में जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं so we get ethylene glycol. इथाइलिन ग्लाइकोल जो है ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट है. अगर आप पानी में इसको डालते हैं तो फिर वाटर आसानी से फ्रीज नहीं होगा. आमतौर पर गाड़ियों के रेडिएटर में लो टेम्परेचर पर पानी जो है वो सॉलिड में आइस में कन्वर्ट होता है जिस दौरान इसकी एक्सपेंशन होती है और इस एक्सपेंशन की वजह से इट इज़ कॉल्ड एनामुलस बिहेवियर ऑफ वाटर. तो पाइप जो हैं रेडिएटर के पाइप सर्दी में अक्सर इस वजह से टूट जाते हैं. तो अगर आप पानी में फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेसेंट डालें जिसकी वजह से उनका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो तो वो फिर टूटते नहीं हैं और वाटर जो है वो जमता नहीं है. तो इसको एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं. सो ग्लाइकोल्स आर यूज्ड एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट इन वाटर इन रेडिएटर्स. Question number next. This is question number 77. When silver nitrate combines with a solution of NaX, so NaX is an ionic salt. जब हम इसके साथ सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं तो इसे बनेगा सिल्वर हैलाइड. अब जो सिल्वर हैलाइड बनता है तो इट में भी silver chloride, it may be silver bromide or it may be silver iodide. आपको कैसे पता चलेगा कि ये हेलोजन जो है ये कौन सा हेलोजन है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है? तो ये इनके कलर से हमें पता चलता है. सिल्वर क्लोराइड मेक्स वाइट प्रिसिपिटेट. इट प्रोड्यूसेस ए पेल येलो, थोड़ा थोड़ा येलो, पीका येलो कलर देता है ये. और इसका कलर जो है इट इज़ ब्राइट येलो कलर. फिर मज़ीद अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं कि ये क्लोराइड है या नहीं है तो इसके साथ फिर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं. अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये सिल्वर क्लोराइड को डिज़ोल्व करता है. इट डिज़ोल्व. तो अगर ये डिज़ोल्व हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका जो X नेगेटिव है दैट इज़ क्लोराइड. जब हम पेल येलो कलर हमें मिल जाता है दैट माइट बी ब्रोमाइड.
अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालें तो ये पार्शली डिज़ोल्व होगा, कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं होगा। और अगर इसके साथ आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो इट डज नॉट डिज़ोल्व। तो अगर हम एक साल्ट ले लें, उसके साथ एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट मिलाएं और वो वाइट प्रिसिपिटेट दे दें, सो इट माइट बी क्लोराइड। और अगर मज़ीद फिर हम इसमें अगर अमोनिया डालें और वो रीडिज़ोल्व हो जाए तो इससे ये बात कन्फर्म हो जाती है कि जो आयन है, नेगेटिव आयन है, जो एसिड रेडिकल है, सो दैट इज़ क्लोराइड रेडिकल। सिल्वर क्लोराइड ये अमोनिया के साथ जब कंबाइन होता है, सिल्वर क्लोराइड, सो वी गेट सिल्वर डाइअमीन chloride, and this is soluble in water. Silver chloride is not soluble, but this complex ion is soluble in water. So this is the correct option in question number 77 is chloride. Select the element which is not ferromagnetic. तो ये आसान क्वेश्चन है और ये याद करने से ताल्लुक़ रखता है उस चीज़ को जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और जिसको हम परमानेंटली मैग्नेट बना सकते हों, तो उसको फेरो मैग्नेटिक कहते हैं। और एक होता है डायमैग्नेटिक, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। सब्सटेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स: पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, पैरामैग्नेटिक आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, एंड फेरोमैग्नेटिक आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर स्ट्रांगली attracted by magnet and they can be permanently magnetized. So iron, cobalt or nickel can be permanently magnetized, but lead cannot be permanently magnetized. तो ऑप्शन नंबर सी जो है lead, it is not ferromagnetic. The total energy 79, question 79, the total energy of electron in a hydrogen atom is, आपको पता है ना कि पहले ऑर्बिट में E1 जो होती है, एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट, दैट इज अराउंड -1312.36 किलो जूल पर मोल. सो दिस माइनस साइन शोज दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 0. सी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 84, निस्लर रिएजेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट अमोनिया. इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. ये आपके प्रैक्टिकल की कॉपी में अगर आप देखें तो अगर आप किसी कंपाउंड में अमोनिया या अमोनियम आयन को अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, सो दैट इज टेस्टेड विद द निस्लर रिएजेंट. निस्लर रिएजेंट क्या है? इसका फार्मूला होता है K2HgI4 और इसको हम कहते हैं, the IUPAC name is potassium tetraiodO mercurate 2. यहाँ पर this is anionic complex because the complex ion has a negative charge, so it is called anionic complex. और anionic complex में जो मेटल का नाम होता है तो उसके आखिर में हम 8 लगाते हैं, so it is mercury, so mercury is changed to mercurate. सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अगर आप एक सॉल्यूशन में जिसमें आपको शक हो कि इसमें अमोनियम आयन है या अमोनिया है, तो आप इसके साथ निस्लर रिएजेंट मिलाएं. अगर ब्राउन प्रिसिपिटेट आपको मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि द आयन विच इज़ प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन दैट इज़ ईदर अमोनिया और इट इज़ अमोनियम. तो ये हवा के अंदर अमोनिया या सॉल्यूशन के अंदर अमोनियम आयन की डिटेक्शन के लिए हम निस्लर रिएजेंट यूज़ करते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 85, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ chromium and CrO2Cl2 is how much? So let we write, as a whole the molecule has 0 oxidation state, so it is unknown. We write X, 2, oxygen is -2, there are 2 chlorine atoms and each chlorine is -1, so we get X minus 4 minus 2 is equal to 0, 0 plus 4 plus 2 is equal to 6.
Oxidation state of chromium in CrO2Cl2 is +6. Similarly, in potassium chromate, the oxidation state of chromium is +6. In potassium dichromate also, the oxidation state of chromium is +6. And remember that if you are asked to find the oxidation number of chromium in chromium pentaoxide, so you might be thinking over here that the oxidation state of chromium is +10, but it is not correct. आपको ये पता होना चाहिए कि maximum oxidation state जो होता है, so that is equal to the group number of element in periodic table. अब क्रोमियम जो है ये 6b ग्रुप में है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होती है 4s1 3d5. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर आप मिलाएं तो 1 + 5 makes 6. So there is a whole 6 electron which can take part in bond formation. तो अगर ये ची के ची इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लें तो फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा. चूँकि मज़ीद इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है नहीं, इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज़्यादा नहीं हो सकता. तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इट इज़ नॉट 10, रादर इट इज़ +6. अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का, ये स्ट्रक्चर है. यहाँ पर इसके जो दो ऑक्सीजन होते हैं इसको परऑक्साइड लिंकेज कहते हैं. दिस इज़ कॉल्ड परऑक्साइड लिंकेज. तो यहाँ पर क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है which is counted with oxygen because oxygen is more electronegative. यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, वो इस ऑक्सीजन के साथ काउंट होगा. ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ और ये वाला इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर. तो टोटल इलेक्ट्रॉन which carbon has shared, they are 6 and they are shared with the oxygen atom. तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है क्योंकि क्रोमियम से इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है. इस पर -1, इस पर -1, इस पर -1 और यहाँ पर -2 होगा क्योंकि यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है. और क्रोमियम ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं? 6. तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम विल बी +6. So the knowledge of oxidation number or oxidation state also give us a clue about the bonding and about the structure of molecules. This is a very important concept. Question number next 86. Question number 86. Sulfur trioxide is hybridized. तो इसमें ये है कि सल्फर SO3-2 इसको सल्फाइट आयन कहते हैं. द आयन इज कॉल्ड सल्फाइट आयन. आप देखें कि सल्फर के साथ आउटर शेल में there are 6 electrons. There are 6 electrons with the sulfur. तो एक पेयर जो है ये ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा एंड इट मेक्स अ डबल बॉन्ड. दूसरा इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है विद अनदर ऑक्सीजन. तीसरा इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है विद अनदर ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में आप देख रहे हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. सल्फर का ऑक्टेट भी आप देख रहे हैं कंप्लीट है. और इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं शेयर किया है. इट इज़ लेफ्ट विद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. हेयर इज़ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो सल्फाइड में जो -2 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है जिसकी वजह से इस पर -1 चार्ज आता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसकी वजह से इस पर -1 चार्ज आता है. सो द स्ट्रक्चर ऑफ SO3 will be SO -1 -1 double bond O and there is a lone pair. So if you calculate the steric number, so how many atoms are attached to sulfur? 1, 2 and 3. And how many lone pairs? So there is 1 lone pair.
and the resultant is 4. So it is sp3 hybridized. When the steric number is 4, hybridization is sp3. Question number next है 94. Which one of the following sample contain largest number of atom? तो इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए. उन्होंने कहा कि ये तो सारों के मोल्स 1 हैं, तो फिर इसमें एटम किसके ज़्यादा होंगे. ये क्वेश्चन ज़रा स्टूडेंट को समझ नहीं आई. असल में जब मोल्स बराबर हों दो चीज़ों के तो उनमें मालिक्यूलों की तादाद सेम होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनमें एटम की तादाद भी सेम हो. नंबर ऑफ एटम जो है देखें, अगर आपको किसी चीज़ का मास ग्राम में गिवन हो, पहले इससे मोल बनाएं. कैसे मोल बनाते हैं? इसको डिवाइड करें बाई मोलर मास, फिर इस मोल से हम मालिक्यूल बनाते हैं, तो इसको एवोगैड्रो नंबर में मल्टीप्लाई करें. और अगर आप मालिक्यूल से फिर एटम बनाते हैं तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना होगा एटॉमिसिटी ऑफ मालिक्यूल से, कि इस मालिक्यूल में एटम कितने हैं. तो अगर आप यहाँ पर इन की कैलकुलेशन करें तो ये 16 ग्राम ऑफ मीथेन, 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, all of them are 1 mole. We have 1 mole methane, we have 1 mole ammonia, we have 1 mole hydrogen. अगर आप इसमें मालिक्यूल गिनना चाहते हैं, so multiplied by Avogadro number, multiplied by Avogadro number, and you get the same answer. So they will all have equal number of molecules. लेकिन अगर आप इसमें एटम मालूम करना चाहते हैं तो फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. Then you will get atoms. Because methane has 5 atoms, 1 carbon atom and 4 hydrogen atom. यहाँ पर एटम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 1 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 4. यहाँ पर एटॉमिसिटी 2 है तो 2 में मल्टीप्लाई करना होगा. तो नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा जो हैं वो मीथेन में होंगे और मालिक्यूल सब में बराबर होंगे. A cylinder of 2 decimeter cube contains 64 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड. तो आप देखें हाइड्रोजन और आयोडाइड का मोलर मास जो है दैट इज़ 1 + 127. इसका हाइड्रोजन आयोडाइड का मोलर मास जो है दैट इज़ 128. तो मोल्स इसके कैलकुलेट करें तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऐसे आता है 0.5 मोल. और मोलरिटी या एक्टिव मास ये एक चीज़ है और इट इज़ इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब. सो दिस इज 0.5 डिवाइडेड बाय 2 and we get 0.25. So the answer is 0.25. An unknown element gas diffuses 2 times more rapidly than methane. मीथेन के मुकाबले में इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है दैट इज़ 2 times greater. So we have an unknown gas, R gas, rate of diffusion of unknown gas divided by rate of diffusion of methane, molar mass of methane, molar mass of unknown gas under root. आप दोनों साइड का अगर स्क्वायर ले लें तो रेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ मीथेन इज इक्वल टू इसका स्क्वायर लें एंड दिस इज MCH4 डिवाइडेड बाय Mg. और चूंकि इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन अननोन गैस का वो 2 times ज़्यादा है फ्रॉम द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन, 2 times ज़्यादा है. सो मोलर मास ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय Mg और ये हो जाएगा 4 into मोलर मास ऑफ द गैस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ CH4. दिस इज 16. 4 को इधर ले आएँ तो मोलर मास ऑफ द गैस विल बी 4. Question number 107. Which is the oxidation number of copper in copper and cesium, copper hexafluoride? Remember, copper has in most of the compound its oxidation number of copper is +2, and it is the stable most state of copper. Here
we know that cesium belongs to first group. So plus 1 into 2 plus 2. And fluorine is minus 1 and here are 6 fluorine. So this is plus 2 and this is minus 6. And it must be plus 4 because as a whole the oxidation state of the molecule is 0. So each cesium has plus 1 charge, each fluorine has minus 1 charge, and copper must have plus 4 oxidation state in this complex. Question number next जो है, the temperature of a gas is raised. This is a tricky question. और ये इसमें ट्रिक ये है कि अगर आप देखें वॉल्यूम जो है it is directly proportional to absolute temperature according to चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ में हमने ये कहा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. दिस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑन द सेंटीग्रेड स्केल. ये गलत है. मतलब ये है कि अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो डबल नहीं होगा. अलबत्ता अगर आप 200 केल्विन से 400 केल्विन अगर करें टेम्परेचर तो फिर वॉल्यूम जो है दैट विल बी डबल. तो आप अगर T1 देखें, T1 इज एक्चुअली 27, इसके साथ 273 मिलाएं तो ये 300 आ जाएगा. और T2 इज 270, 370, 327 है, इसके साथ अगर आप 273 मिलाएं तो ये 600 है. तो एक्चुअली टेम्परेचर इज डबल्ड इन दिस केस. सो व्हेन यू डबल द टेम्परेचर द वॉल्यूम विल आल्सो डबल. So the correct option is A. Which of the following compound possess hydrogen bond? जिस compound में भी OH ग्रुप हो या NH ग्रुप हो तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं. चूँकि फिनोल के अंदर OH ग्रुप है और एमाइंस में NH ग्रुप होते हैं. So these compound they contain hydrogen bonding. So the correct option is D. Question number 114. एन एक्स बिलोंग टू, हमारे पास दो एलिमेंट हैं, एक x है और दूसरा y, x एंड y. अब x का जो दिस बिलोंग टू फर्स्ट ए ग्रुप, इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और y बिलोंग टू 6A ग्रुप, तो 6 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है. तो ये जब कंपाउंड बनाते हैं तो इनके कंपाउंड का फार्मूला ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो इट कम्स आउट टू बी x2y. क्वेश्चन नंबर 115. फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp इज ग्रेटर, Kp इज ग्रेटर देन Kc. तो ये तब होगा जब प्रोडक्ट के मोल्स वो ज़्यादा होंगे रिएक्टेंट के मोल से. और आप देखें कि ऑप्शन नंबर डी में प्रोडक्ट्स के मोल ज़्यादा हैं रिएक्टेंट के मुकाबले में. सो फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ Kp इज़ लार्ज, विच इज़ करेक्ट व्हेन हीट इज़ एडेड. तो केमिस्ट्री में हम ये कहते हैं कि जब हम हीट ऐड करते हैं तो Q पॉजिटिव होगा, और जब हम वर्क लेते हैं सिस्टम से, हम काम लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये W नेगेटिव होगा. सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट. A इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस Q माइनस W, यानी हीट इज़ गिवन टू द सिस्टम and work is extracted from the system. Question number 124. When 1 Faraday charge is passed through a solution of aluminium chloride, तो ये आपने Faraday's law पढ़े हैं, उसमें हमने बताया कि Faraday जो है it is equal to इतने कूलम. चार्ज को हम 1 Farad कहते हैं या 1 Faraday चार्ज. ये चार्ज जब आप किसी सोल्यूशन से गुजारते हैं तो उस एलिमेंट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपको इलेक्ट्रोड के ऊपर मिलेगा. अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट किस चीज़ के बराबर होता है? ये बराबर होता है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट. अब अगर आप एल्यूमिनियम देखें तो एल्यूमिनियम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम divided by valency number of aluminium. So you get 9. So you will get 9 gram of aluminium. When 1 Faraday charge is passed through an electrolytic solution,
then 1 gram equivalent of a substance will be deposited on a particular electrode. And what is 1 gram equivalent? It is the atomic mass of an element divided by valency number of that element. Question number 125. The rate of reaction is 0.02 for a reaction. When the concentration is doubled, the rate becomes 0.08. आप देखें 0.02 से रेट 0.08 तक चला गया, इसका मतलब है कि 4 टाइम्स ज़्यादा हुआ। तो जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 टाइम्स ज़्यादा हो तो ऐसे रिएक्शन का ऑर्डर 2 होगा। इट इज़ ए टाइप ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो 2 है। क्वेश्चन नंबर 126, इन ड्राई सेल विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड? तो एक्चुअली ड्राई सेल में जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और MnO2 जो है ये Mn2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंगानीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, यहाँ पर +3 होता है। सो द रिजल्ट इज दैट जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड and manganese dioxide is reduced in the dry cell. This is option number D. Question number 131, which of the following is more concentrated solution? तो आप देखें ये 3 ऑप्शन, बी ऑप्शन में 1 मोलर ग्लूकोज है, फिर 0.1 मोलर सोल्यूशन है, फिर 0.1 मोलर यूरिया, तो 0.1 की कंसंट्रेशन तो कम है। यहाँ पर अब हमने ये कंपेयर करना है कि 1 मोलर ग्लूकोज ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा कि 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा। तो ये ज़रा ट्रिकी क्वेश्चन है और इसको आप समझें। मोलरिटी जो है 1 मोलर सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने 1 मोल फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोज लिया है और बाकी आपने वाटर लिया है और सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर के बराबर है। सो सच सोल्यूशन इज कॉल्ड 1 मोलर। ऑन द अदर हैंड 1 मोलर सोल्यूशन में वी टेक 1 मोल ऑफ सोल्यूट एंड वी टेक 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ solvent, 1 kilogram of solvent. In case of water, 1 kilogram is equal to 1 liter. In case of water, 1 kg of water is equal to 1 liter. इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सोल्यूशन आपके साथ बनेगा तो उसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1 डेसीमीटर क्यूब। तो मोलर सोल्यूशन में एक्चुअली मोलर सोल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मजमूई वॉल्यूम 1 लीटर होता है। मोलर सोल्यूशन में सिर्फ पानी का वॉल्यूम 1 लीटर होता है। सो इन केस ऑफ मोलर सोल्यूशन यू हैव मोर वाटर and in case of 1 molar solution you have less amount of water. So that's why 1 molar solution will be more concentrated. Molarity is greater concentration as compared to molality of a substance. So option number B is correct. Which one of the following gives silver mirror test? Silver mirror test जो है ये aldehyde ये टेस्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप फार्मिक एसिड को देखें, इफ़ यू लुक एट द फार्मिक एसिड, तो फार्मिक एसिड में आप अगर इस तरफ देखें सो इट इज़ अ कार्बोक्सिल ग्रुप, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन अगर आप ये ग्रुप ले लें दिस वन, सो दिस रिजेंबल्स टू द एल्डिहाइड्स। इस वजह से फार्मिक एसिड जो है ये एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा। That's why it will give Talens test and it will give filling solution test. So acetaldehyde, which is an aldehyde, it gives silver mirror test and also formic acid. So option number D is correct. The sugar of RNA differs from DNA. आपको पता है DNA is deoxyribonucleic acid. So the ribose sugar in case of RNA, it has one more oxygen, but in case of DNA, it has 1 less oxygen. और ये ऑक्सीजन किस कार्बन पर कम होता है? कार्बन नंबर 2 पर। तो इसको आप याद रखें। The only non-reducing sugar among the following is, आप ये याद रखें कि जो मोनोसेकेराइड हैं वो सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, लेकिन among डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड सिर्फ सक्रोज जो है
सो दैट इज़ नॉन रिड्यूसिंग। बाकी जो लेक्टोज है या गैलेक्टोज है, लेक्टोज जो है या दूसरे जो डाइसैकेराइड सोल्यूशन हैं, सो दे आर एक्चुअली दे आर रिड्यूसिंग। ओनली सक्रोज इज़ नॉन रिड्यूसिंग, और उसकी वजह यह है कि सक्रोज बनता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज के दो मालिक्यूल के मिलाप से। तो इसमें जो अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो एक्टिव होते हैं, जो रिड्यूसिंग एक्शन दिखाते हैं, तो वो दोनों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लेते हैं। यानी द reducing part of glucose and reducing part of fructose, they both make a glycosidic bond. So they are involved in glycosidic bond. Therefore, they are then unable to cause the reduction of the filling solution. So sucrose is, due to its structure, it is a non-reducing sugar. General formula of carbohydrate is option number C is correct, CXH2OY. Amino acid exists in the form of a zwitter ion. ये देखें RC, this is COO, this is H, and here is NH2 group. So this hydrogen shifts here and you get RCNH3 HCOO negative. Now this type of ion in which one positive charge is there and one is negative charge, it is called zwitter ion. Zwitter का मतलब होता है जुड़वा, तो ये जुड़वा आयन है। अमाइनो एसिड एग्जिस्ट होते हैं इस फॉर्म में, ज़्यादातर अमाइनो एसिड इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। So there is ionic character in the amino acid, and that's why amino acid are solid organic compound. So the solid nature or the high melting point of the amino acid reflect that they have ionic character. Question number 150, this is question number 143, option number C is correct. 151, which test is used to determine unsaturation in oil? Oil के अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, तो इसको मालूम करने के लिए कि इसमें डबल बॉन्ड ज़्यादा हैं कि कम हैं, उसके साथ हम आयोडीन मिलाते हैं। So the number of grams of iodine which are required to saturate 100 grams of fat or oil is known as iodine number of fat of oil. तो जिस ऑयल में आयोडीन ज़्यादा इस्तेमाल होगा उसका आयोडीन नंबर ज़्यादा होगा उसको सिचुरेट करने के लिए, एंड देट विल बी हाईली अनसिचुरेटेड। और अनसिचुरेटेड ऑयल जो है ये फिर इसमें रेंसिडिफिकेशन होती है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, इस वजह से दे आर नॉट डिज़ायर्ड। इस अनसिचुरेशन की वजह से लाखों टन ऑयल जो है वो हर साल ज़ाया होता है। तो इस वजह से हम ऑयल की हाइड्रोजनेशन करते हैं इन ऑर्डर टू मेक देम स्टेबल, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो और उसकी फाउलिंग ना हो। So iodine number is used as a test to find the unsaturation in the compound. Deficiency of zinc causes growth retardation, loss of hair, impairment of taste, all of them. तो इसमें all जवाब ठीक है। Question number 153, consider reaction of A plus B, C and D, the equilibrium concentration of B, ये हमारे पास रिएक्शन है, A plus B makes 2 moles of C and D. Equilibrium concentration इसकी है 10 mole per decimeter cube. जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, इसमें हम 5 डेसीमीटर क्यूब जो है मज़ीद हम इसमें डाल देते हैं, B है। What will be the new equilibrium if 5 moles of pure B, इसके साथ हम 5 moles और B मिलाते हैं। अब इसकी कंसंट्रेशन टोटल तो 15 हो गई, लेकिन when you increase the concentration of reactant forward reaction will occur, तो इसका कुछ हिस्सा जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये पूरा कन्वर्ट नहीं होगा प्रोडक्ट में, लेकिन इसका कुछ हिस्सा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखें, अगर इसका फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 5 अगर 1 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पर बाकी रह जाएगा 4 moles. So the concentration of B will be 10 plus 4, say it is 14. So the concentration, the new concentration of B will be in between 10 and 15.
when the equilibrium concentration is 10, you are adding 5 moles of B, so it should be 15, but some of it will reconvert into the product according to Shelder principle. तो इस 5 में से कुछ हिस्सा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब 5 से ये थोड़ा सा कम हो जाएगा और फाइनल कंसंट्रेशन विल बी 10 प्लस द अमाउंट ऑफ B which is left, so that will be in between 10 and 15. Question number 161. Consider the following equilibrium: SO2 plus half O2 SO3, SO2 plus half O2 SO3 and 2 SO3 and 2 SO2 plus O2. इसका equilibrium constant K1 है और इसका K2 है. तो ये देखें कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर K की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है. आप इक्वेशन में कुछ भी मोल्स कोएफिशिएंट के तौर पर अगर आप लिखेंगे, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ K, सो दे हैव द सेम वैल्यू. सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर SO3 प्रोडक्ट है और यहाँ पर SO3 रिएक्टेंट है, तो K1 विल बी इक्वल टू 1 ओवर K2 एंड K2 विल बी इक्वल टू 1 ओवर K1. बाकी कोएफिशिएंट बढ़ाने से या कम होने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई असर नहीं पड़ता. So the correct choice is C, that K2 will be equal to 1 over K1. This is K1. 162. Look at the following equilibrium in a closed container. Calcium carbonate changes to calcium oxide and carbon dioxide. What will happen if you add more calcium carbonate? What will happen to the equilibrium state? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से या कम होने से इक्विलिब्रियम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड रिएक्टेंट है, इसको अगर आप ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे तो इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट. दैट्स व्हाई द कार्बन डाइऑक्साइड, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स कांस्टेंट. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. What is the pH of solution of 4 gram if 4 gram of sodium hydroxide is dissolved per liter? 4 gram sodium hydroxide, इससे मोल्स बनाए तो 4 divided by molar mass is 0.1 mole. So molarity is equal to 0.1 mole divided by 1 decimeter cube. It is 0.1. As it is a base, so we will find POH minus log of OH minus log of 10 raised to the power minus 1 gives us plus 1, and POH is 1, so POH will be 13 because the sum of pH and POH is always equal to 14. So option number C is correct. Consider the exothermic reaction N2H2. For this reaction 400 to 5 degree centigrade temperature is used. The high temperature is desired because. तो आप ये याद रखें कि जब एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर को ज़्यादा करते हैं, जैसे डेल्टा H इज़ नेगेटिव, इट इज़ एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर ज़्यादा होने से बैकवर्ड रिएक्शन होगा. मतलब ये है कि अमोनिया की मिकदार कम होगी और रिएक्टेंट की मिकदार ज़्यादा होगी, तो प्रोडक्ट तो कम हो जाता है हीटिंग से इन दिस केस. बट व्हाई हाई टेम्परेचर इज मेंटेन्ड इन हेबर प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया? सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग. और इसका जवाब ये है कि एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा मकसद यहाँ पर रिएक्शन को स्पीड अप करना होता है. The purpose of increase of temperature is not to increase the amount of the product, rather it is used to increase the speed of reaction. So option number C is correct. The order of nucleophilicity of halide ion. न्यूक्लियोफाइन कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को. तो जितना किसी नेगेटिव आयन का साइज बड़ा होगा तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे सकता है. क्लोरीन का साइज छोटा है. The electron of chlorine are tightly bound with the chlorine atom. Iodine का size larger है, so the electron of iodide are weakly bound with iodine. So it is easier for iodide to combine with the carbon atom as compared to bromide ion. So nucleophilicity of iodide is greater than
bromide due to larger size, and bromide is more nucleophile than chloride due to the same reason. In salt analysis, we add HCl before H2S. H2S डालने से पहले हम HCl क्यों डालते हैं? तो इसका मेन मकसद ये होता है कि हम कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से यहाँ पर H2S की आयोनाइजेशन को एक्चुअली हम कम करना चाहते हैं ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट ये है कि अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बनाया है और आप उसमें कॉमन आयन वाला कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो उसकी आयोनाइजेशन कम हो जाती है। चुनांचे यहाँ पर सल्फाइड आयन की तादाद कम हो जाएगी और इसका मकसद ये है कि HCl की मौजूदगी में जब हम H2S मिलाते हैं तो सिर्फ सेकंड ग्रुप के जो बेसिक रेडिकल हैं वो प्रेसिपिटेट देते हैं, हायर ग्रुप के जो सल्फाइड हैं वो प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 184, which of the following compound does not form alcohol on reaction with Grignard reagent? तो आपको पता है कि formaldehyde, acetaldehyde and acetone they make alcohol on reaction with the Grignard reagent, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है it form carboxylic acid. So D option is correct. 185, in elimination reaction of the alkyl halide, the more suitable site for the base to attack, बेस के अटैक के लिए मोर सुटेबल साइट जो है वो कौन सा होता है इन एलिमिनेशन रिएक्शन? तो आप देखें, लेट्स सपोज दिस इज वी हैव इथाइल ब्रोमाइड और हम इसका बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेस जो है ये अल्फा कार्बन है, दिस इज बीटा कार्बन, दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन। तो ये इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा एंड you will get water, you will get an alkene and you will get bromide ion. So the attack of base is on the beta hydrogen. The more suitable place for the attack of base is actually the beta hydrogen. 186, methyl alcohol on oxidation produces which compound? तो ये आप देखें कि अल्कोहल जो हैं इसकी जब ऑक्सीडेशन करते हैं सो दे कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन अगर आप करें सो दे कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें पार्शियल ऑक्सीडेशन तो इससे फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, लेकिन अगर आप इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं देन इट गिव्स फॉर्मिक एसिड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। 191, an alcohol which is produced during the formation of soap. Soap is a triglyceride. तो जब इसकी हम soap जब बनता है तो soap जो है it is made by the action of fat or oil with sodium hydroxide. अगर आप fat ले लें, this is RC double bond O, RC double bond O and RC double bond O, this is CH2 and O. आप इसके साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाएंगे। You will get 3 moles of carboxylic acid and you will get the CH2OH, CHOH, CH2OH, so you get glycerol. Iodoform test cannot be performed for which of the following compound? तो ये ज़रा important question है। आप देखें ये अल्कोहल है हमारे पास, this is methyl alcohol and this is ethyl alcohol. This is called alpha and this is beta carbon, this is alpha carbon. तो ऐसा अल्कोहल जो है वो आयोडोफॉर्म बना सकता है which has 3 hydrogen and beta carbon. तो बीटा कार्बन पर यहाँ पर है नहीं, इस वजह से ये आयोडोफॉर्म नहीं बनाएगा। और ये जो कंपाउंड है बीटा कार्बन, ये CH3, ये असल में दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म।
दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसी तरह इन केस ऑफ अल्डिहाइड अगर आप देखें, दिस इज़ वन अल्डिहाइड एंड दिस इज़ another aldehyde. In case of aldehyde, this carbon is not alpha carbon, this one is alpha, and next to the functional group, this carbon is alpha, this is alpha beta. तो aldehydes और ketone में, in case of aldehyde and ketones, iodoform तब बनेगा जब आपके साथ अल्फा कार्बन पर हैज़ 3 हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर अगर आप देखें अल्फ़ा के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो इट कैन नॉट फॉर्म आयोडोफॉर्म। और यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हैं, सो इट कैन मेक आयोडोफॉर्म। इसी तरह अगर आप एसीटोन देखें, तो एसीटोन में ये भी अल्फ़ा कार्बन है, ये भी, दोनों के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, सो इट कैन मेक आयोडोफॉर्म। क्वेश्चन नंबर लास्ट वन, दैट इज़ द रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं 95% जो स्पिरिट होता है, जिसमें 5% वाटर होता है और बाकी इसमें अल्कोहल होता है, सो दैट इज़ इथाइल अल्कोहल होता है। सो 95% solution of ethyl alcohol and 5% water, this is called rectified spirit. अगर 100% अल्कोहल हो तो इसको एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाता है। और एक क्वेश्चन में कार्बोलिक एसिड का नाम आया है, कार्बोलिक एसिड। तो कार्बोलिक एसिड इज़ अ मिक्सचर ऑफ 5% वाटर and 95% phenol. This mixture is called carbolic acid. So when there is 5% of water and you have 95% of phenol, this is called carbolic acid, and it is a very good antiseptic. This is in question number 25. If you look at question number 25, liquid phenol with 5% water is called carbolic acid. In question number 25, that was left, the option number C is actually correct. Thank you very much.